मॉर्निंग, दिस इज उत्तम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राइड का दूसरा दिन सुबह के 9 बजे और अभी हम निकलने वाले हरिहरेश्वर के लिए। और सेकंड पॉइंट है हमारा श्रीवर्धन बीच। उसके बाद हमें शाम को निकलने मुंबई के लिए। आज टाइम कम है और पॉइंट 2 जो देखने हैं। 2 पॉइंट में तीसरा पॉइंट भी है जो कि अननोन बीच है, आरवी बीच। अगर हो सके तो वो भी देख लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए चलते अपने पॉइंट्स को, लेट्स गो। और आई होप आपको कल का जो मेरा ब्लॉग था पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेक कर लो। जैसे ही मसला से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो रास्ता जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा और बीच बीच में जो है गड्ढे वगैरह है, सो गाड़ी संभाल के चलाइए। रोड कंडीशन ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है यहाँ की। और ये राइट साइड में पार्किंग है और यहाँ पे पेड पार्किंग है और टेंपल के जस्ट बाहर ही है। आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग यहाँ पे पार्क कर सकते हो। हम लोग पहले बाइक पार्क कर लेते। गाइस, ये रहा आपके सामने श्रीवर्धन बीच। काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बैठने के लिए चेयर्स, वॉकिंग के लिए अलग से जगह बनाई यहाँ पे। हम लोग अभी ड्रोन उड़ाते हैं, आप ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको श्रीवर्धन बीच के ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं आरवी बीच की तरफ। और आरवी बीच अननोन बीच है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ से श्रीवर्धन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। और आज एक्चुअली प्लान था हम लोग को निकलने का मुंबई के लिए, लेकिन अभी नहीं निकल रहे क्योंकि शाम हो गई। कल निकलेंगे। जिस बीच की मैं बात कर रहा था, अननोन बीच, ये है आरवी बीच। फेमस तो नहीं है लेकिन क्राउड बहुत कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअली जो रोड है ये कोस्टल रोड है। दिव्यागर से लेके श्रीवर्धन ट्रैवल कर रहे हो आप तो वो रोड में ये जो आपको मिलेगा आरवी बीच। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ आके ज़रूर विजिट करो। काफ़ी पीसफुल और शांत एरिया है। फैमिली के साथ आओ, टेंट लगाओ, रहो, एंजॉय करो, चिल करो।
मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं एक्चुअली ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर। अभी सनसेट होने वाला है तो ड्रोन शॉट्स भी लेने उसके पहले और टाइम लैप्स भी लेना है। सो लेट्स गो। शॉट लिए, सनसेट देखा, खूबसूरत सा सनसेट था, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे रुक के। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। सो काफ़ी अच्छी जगह थी यहाँ पे। और हमारी जो श्रीवर्धन की राइड थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको दोनों जो वीडियोज़ है पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ के रिलेटेड कुछ भी, तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। बाय बाय।